Hello. In this lecture, it is a lecture of real analysis, and in this lecture we will see some examples of limit of a sequence using Epsilon Delta method. So, let us see this example. Using Epsilon Delta method, show that limit as n tends to infinity, n square divided by n minus 7 whole square minus 6 is equal to 1. Actually, this example is very easy. By dividing n square and using the limit at infinity, we will get directly 1. But the condition is given, and we have to solve this example by using Epsilon Delta method in real analysis. Actually, to solve this problem, let us discuss some plan. So what we should do here? So the definition of Epsilon Delta method is suppose Sn is the nth term of the sequence, and we have to show that this Sn tends to number L as n tends to infinity. The meaning is we have to show that given epsilon greater than 0, this is the definition, given epsilon greater than 0, we must find an positive integer capital N, positive integer, such that the mod of Sn minus L less than epsilon, and this inequality will be hold for all n greater than or equal to n. तो यहाँ इसका मतलब ये होता है कि इप्सिलॉन आपको लेना है, और आप जो इप्सिलॉन लेंगे पॉजिटिव, आपको एक पॉजिटिव इंटीजर कैपिटल एन ढूंढना होगा जो इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करेगा. तो आप इस L को इस Sn का लिमिट बोल सकते हो. तो इस एग्जांपल को सॉल्व करने के लिए यहाँ पर Sn जो है वो है here in this example here Sn is equal to n square divided by n minus 7 whole square minus 6 and the L is equal to 1. तो ये Sn और ये L लेकर आपको एप्सिलॉन भी लेना है, और आपको ये कैपिटल N जो है वो एग्जिस्ट होता है जो इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करता है, ये आपको शो करना होगा. तो हमारा एग्जांपल सॉल्व हो जाएगा. तो Sn का डिनोमिनेटर हम पहले ही सॉल्व करते हैं. तो Sn इज इक्वल टू, वी कैन सिंप्लीफाई द डिनोमिनेटर ऑफ Sn. सो न्यूमरेटर कीपिंग एज इट इज, दिस इज n स्क्वायर माइनस 14n plus 49 and minus 6, that is plus 43. So this is our Sn and L is equal to 1. तो हमें इसको सॉल्व करने के लिए जस्ट फाइंड करना है what will be the positive integer capital N, so that for all small n greater than or equal to capital N, this will be hold. All right. So let us see, we'll solve this example. So consider, so we'll solve this, consider mod Sn minus L less than epsilon for all n greater than or equal to n. So we have to find this capital N. Alright. So your Sn is n square divided by n square minus 14n, and what is that? That is plus 43 minus L is 1 less than epsilon, and keep this always as it is. Alright. तो यहाँ पर ट्रिक इस एग्जाम्पल को सॉल्व करने की ये है कि इस मॉड में जो एक्सप्रेशन दिख रहा है, आप इसको इस तरीके से सॉल्व कीजिए कि यहाँ सिर्फ स्मॉल n आए और ये लेस देन साइन ग्रेटर देन हो जाए. तो फाइनली आप वहीं आके रुकोगे इसको सॉल्व करके जहां पर n ग्रेटर देन सम एक्सप्रेशन इन टर्म्स ऑफ इप्सिलॉन रहेगा. ऑलराइट, तो
तो चलिए हम इसको पहले सॉल्व करते हैं। तो ये सब्सट्रैक्शन हम करेंगे, तो सब्सट्रैक्शन आएगा n स्क्वायर माइनस 14n प्लस 43 और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होने के बाद यहाँ आएगा n स्क्वायर और ये उधर जाएगा, माइनस की वजह से सारे साइन चेंज होंगे, माइनस n स्क्वायर प्लस 14n माइनस 43 and this is less than what? Epsilon for all n greater than or equal to n. ये हमेशा आपको लिखना ही है। अब n square get cancelled, therefore I am getting the mod of 14n minus 43 in the numerator and n square minus 14n plus 43 in the denominator less than epsilon for all n greater than or equal to n. ठीक है, अब आपको अगली स्टेप को थोड़ा सा ध्यान से समझना होगा कि यहां पर करना क्या है। ठीक है, तो देखिए ये डिनोमिनेटर में इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन n, इसलिए ये इतना आसान नहीं है यहाँ पे n लाना। तो मैं कुछ यहाँ ट्रिक यूज करूंगा। तो देखिए न्यूमरेटर में है 14n माइनस 43, ओके, तो n पॉजिटिव है, तो आप बता सकते हो कि 14n में से 43 माइनस होने के बाद जो आंसर आएगा वो 14n से छोटा ही रहेगा। इज इट राइट? तो न्यूमरेटर को मैं क्या लिख रहा हूं, देखिए न्यूमरेटर को मैं लिख रहा हूं द 14n, ऑलराइट, 14n यहां पर लिखता हूं और यहां पर लिखता हूं मैं 14n माइनस 43। अब 14n में से 43 माइनस करोगे तो ऑब्वियसली दिस सब्सट्रैक्शन हैज लेस वैल्यू देन दिस 14n, तो आपको इनइक्वालिटी मिलेगी लाइक दिस, राइट, दैट इज 14n minus 43 is less than 14n. All right, let me call this expression is an equation number 1. Now I'm considering the denominator. Okay, so denominator I'm writing here n is a positive, therefore n square minus 14n, and now here I'm writing n square minus 14n plus 43. Let us see, this is adding by 43, तो डेफिनेटली ये जो एडिशन है ये इस साइड से बड़ा रहेगा, तो आई एम राइटिंग लाइक दिस। ओके, अब हम क्या करेंगे, दोनों का रेसिप्रोकल लेंगे, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन n स्क्वायर माइनस 14n और ये हो जाएगा 1 अपॉन n स्क्वायर माइनस 14n प्लस 43। और आप जानते हो कि अगर आप दोनों साइड का रेसिप्रोकल लेते हो तो इनइक्वालिटी रिवर्स हो जाती है, तो ये लेस देन था तो ये हो जाएगा ग्रेटर देन। ऑलराइट, तो अब ये हो जाएगा दैट इज नथिंग बट 1 अपॉन n स्क्वायर माइनस 14n प्लस 43 इज लेस देन 1 upon n square minus 14n. Now let me call this expression is an equation number 2. Alright, equation 1 और equation 2 इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये न्यूमरेटर होगा, ये डिनोमिनेटर होगा, लेस देन as it is रहेगा, and you are getting 14n divided by n square minus 14n. So exactly मुझे क्या करना है, देखिए इस मॉड को इधर देखिए ब्लैक शीट पे जो इधर का मॉड है, that mod value is less than this 14n divided by n square minus 14n, and this is less than, I am considering what, epsilon. All right, so what I am writing in the next slide, that is this is therefore next step should be, this is your original 14n minus 43 divided by n square minus 14n plus 43, and this is less than, already you have shown that this is 14n because 14n is greater than this quantity. We have
prove this. And here n square minus 14n. And now I am considering this as less than what? Epsilon. So, to simplify this, I am considering only 14n upon, I can take n as a common from the denominator, n minus 14 less than epsilon for all n greater than or equal to n. Keep in mind, ये मैंने जो कुछ भी किया है सिर्फ यहाँ n आए इसलिए किया है, ठीक है? तो ये n और ये n कैंसिल हो जाएगा, इस 14 को हम इधर ट्रांसफर करेंगे तो हमें मिलेगा mod of 1 upon n minus 14 only less than epsilon upon 14 for all n greater than or equal to n. अभी भी इधर n नहीं आया है, तो मुझे क्या करना होगा, इसका रेसिप्रोकल लेना होगा, तो ये हो जाएगा n minus 14 और ये हो जाएगा 14 अपॉन एप्सिलॉन और रेसिप्रोकल लेने की वजह से ये हो जाएगा ग्रेटर दैन. यू नो दैट n इज अ पॉजिटिव और n minus 14 हमेशा छोटा रहेगा n से, तो shall I write like this mod of n और यहाँ लिखता हूँ mod of n minus 14 और ये है 14 by एप्सिलॉन. अब देखिए n में से 14 माइनस किया है तो ऑब्वियसली ये क्वांटिटी बड़ा रहेगा तो ये होल्ड होगा. इज इट राइट? तो अभी आपको मिलेगा एक्चुअल, इन दोनों को हम इनइक्वालिटी में इक्वेट करेंगे इन दोनों को. तो नेक्स्ट स्टेप में हम लिखेंगे mod ऑफ n greater than 14 upon epsilon for all n greater than or equal to what? n. Is it right? n is a positive, so mod of n is n, so n is greater than 14 upon epsilon for all n greater than or equal to n. देखिए n आ गया, इधर भी n है, greater than, तो इसका मतलब आपका कैपिटल n ग्रेटर होना चाहिए 14 अपॉन एप्सिलॉन से. तो हम यहां मेंशन करेंगे therefore we must take capital N greater than 14 upon epsilon such that mod Sn minus L less than epsilon hold for all n greater than or equal to n. That means we have found such a positive integer. Actually, there is a variety, number of varieties of positive integer, and you can take any positive integer greater than 14 by epsilon. That means there guaranteed exists this capital N. And therefore, we have found this capital N, therefore limit as n tends to infinity, Sn is equal to L. And our Sn is limit as n tends to infinity. What is our Sn? This is n square divided by n minus 7 whole square minus 6. And this is equal to L. L is 1. So this is proved. Alright. So let us see one more example. So what will be the next example? Using epsilon delta method, show that limit as n tends to infinity 2n cube plus 5n divided by 4n cube plus n square is equal to 1 by 2. So what will be our plan? Plan is here Sn is equal to 2n cube. We can take n as common. So here 2n square plus 5. Alright. And we can take n as a common from the denominators. So n, this is 4n square plus n. Alright, and get cancelled. So this is your Sn in simplified form. And here L is equal to 1 by 2. So what we have to show here, so take epsilon greater than 0 and we must find positive integer. This is the plan, okay? Positive integer n such that mod Sn minus L less than epsilon will be hold for all n greater than or equal to this positive integer n. तो यहाँ पर हमें ऐसा पॉजिटिव इंटीजर ढूंढ के निकालना है
जो इस इनइक्वालिटी को होल्ड करेगा फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू n। तो हमारी जिम्मेदारी इस एग्जांपल में सिर्फ इतनी है कि जस्ट फाइंड आउट पॉजिटिव इंटीजर n। ऑलराइट, तो पिछला जो एग्जांपल था उसी प्रकार से हम इसको भी सॉल्व करेंगे, लेकिन याद रखिए हमारा Sn अब है 2n स्क्वायर प्लस 5 डिवाइडेड बाय 4n स्क्वायर प्लस n और l है 1/2। तो कंसिडर करना होगा हमें 2n square plus 5, this is we are considering, consider, this is the actual solution, consider mod Sn minus L less than epsilon for all n greater than or equal to n. We have to find this n, keep in mind. So what is the value of Sn? Sn is 2n square plus 5 divided by 4n square plus n minus L is 1/2 less than epsilon for all n greater than or equal to n। अब देखिए इस एक्सप्रेशन को इस तरीके से सिंप्लीफाई करना है कि यहां पर सिर्फ n, छोटा n, स्मॉल n रहे और ग्रेटर देन हो जाए इधर, और यहां पर सम एक्सप्रेशन कंटेनिंग इप्सिलॉन ये होना चाहिए। ऑलराइट, तभी हम कैपिटल N का एग्जिस्टेंस बता सकते हैं। सो जस्ट सिंप्लीफाई द एक्सप्रेशन इनसाइड द मॉड। सो दिस इज मॉड, डिनोमिनेटर का मल्टीप्लिकेशन करते हैं 2 4n स्क्वायर प्लस n इन द डिनोमिनेटर, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने के बाद ये हो जाएगा 4n स्क्वायर प्लस 10, 2 से मल्टीप्लाई हुआ, और ये माइनस को जब ये मल्टीप्लाई होगा तो माइनस 4n स्क्वायर माइनस n लेस देन इप्सिलॉन फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू n। ऑलराइट, तो यहां पर ये 4n स्क्वायर गेट कैंसल, न्यूमरेटर में बचेगा 10 माइनस n, लेकिन ये मॉड में है और मॉड में 10 माइनस n या n माइनस 10 कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो इसलिए हम यहां पर लिखेंगे therefore mod of n minus 10, okay, 10 divided by 2 times 4n square plus n less than epsilon for all n greater than or equal to n। ठीक है, ये जो 2 है ये आप यहां से हटाकर इधर भी लिख सकते हो। सो आई एम शिफ्टिंग दिस टू ट्रांसफॉर्म दिस साइड, सो इट विल बिकम 2 epsilon। ऑलराइट, नाउ अब आपको यहाँ n लाना है, तो देखिए न्यूमरेटर में यहाँ लिखता हूं n, यहाँ लिखता हूं n माइनस 10। अब n में से 10 माइनस हो जाएगा तो क्वांटिटी तो छोटी हो जाएगी, तो ये ऐसा हो जाएगा, that is n minus 10 is less than n। मतलब इस एक्सप्रेशन में n माइनस 10 को हटाकर आप n लिख सकते हो। ऑलराइट, अब देखिए मैं क्या कर रहा हूं, n इज अ पॉजिटिव इंटीजर, तो ये 4n स्क्वायर रहेगा और इधर रहेगा 4n स्क्वायर प्लस n। अब प्लस n पॉजिटिव है तो आप ऐड कर रहे हो तो डेफिनेटली ये बड़ा रहेगा, तो ये बड़ा हो जाएगा। राइट, अभी मैं इसको रेसिप्रोकल लेता हूं तो आपको मिलेगा 1 अपॉन 4n स्क्वायर प्लस n, और इधर आएगा 1 अपॉन 4n स्क्वायर, और ये जो है वो बरकरार रहेगा लाइक दिस। समझ रहे हो आप? एक्चुअली ये बड़ा है, रेसिप्रोकल होने के बाद ये छोटा हो जाएगा, तो ये छोटा ही हुआ है। ओके, अब हम ये और ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये मिलेगा, तो लेस देन ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो n अपॉन 4n स्क्वायर मिलेगा। तो दैट्स व्हाई आई एम राइटिंग मॉड ऑफ n माइनस 10 डिवाइडेड बाय 4n स्क्वायर प्लस n लेस देन, this you multiply these two and write here n upon 4n square, equality holds, less than what? Epsilon for all n greater than or equal to n। Alright,
And therefore, this n get cancelled. Therefore, I am getting 1 upon 4n less than epsilon for all n greater than or equal to n. देखिए मेरी कोशिश यही है कि यहाँ सिर्फ n रहे. अब ये सिंपल हो गया. अब मैं रेसिप्रोकल लूंगा. ये 4 को आप उधर शिफ्ट कीजिए तो आपको मिलेगा 1 upon n less than 4 epsilon and then take the reciprocal. ओके, तो आपको मिलेगा mod n greater than 1 upon 4 epsilon for all n greater than or equal to n. Right? तो n is a positive, तो mod आप हटा भी देंगे तो चलेगा. मतलब n greater than 1 by 4 epsilon for all n greater than or equal to n. मतलब आपका कैपिटल N 1 upon 4 epsilon से बड़ा होना चाहिए. So we may take, we may take what positive integer n greater than 1 upon 4 epsilon. Therefore, n greater than 1 upon 4 epsilon such that mod Sn minus L less than epsilon for all n greater than or equal to n. And therefore, limit as n tends to infinity. What is your question? 2n cube plus 5n divided by 4n cube plus n square is equal to L. And what is L? L is 1 by 2. तो हम यहाँ पर इस एग्जाम्पल में कैपिटल N कौन सा भी लीजिए आप, लेकिन शर्त ये है कि वो पॉजिटिव इंटीजर 1 अपॉन 4 इप्सिलॉन से बड़ा होना चाहिए. तो ये इनइक्वालिटी जो यहाँ पर दिखाई दे रही है उस इंटीजर के लिए ये इनइक्वालिटी सेटिस्फाई होगी. और ये मिलना जरूरी होता है. कैपिटल N यहाँ पे मिल गया और इसलिए इसका लिमिट 1/2 आएगा. So these are the two examples you can study for the university examinations.